Thistle
trembling tabby cat trapped in thorny bushes. The cat's leg bore bloody marks from a man-feeding encounter that left him limping. The rabbit's heart raced. Gnawing through the brambles, she nudged the cat. Come, calm. But trusting, the cat hobbled to the rabbit's burrow. Though a herbivore, the rabbit remembered the dried fish a kind badger once gifted her. She fed the cat, fed his wounds with herbs, and sang soft lullabies to sleep. Over days, the cat regained strength. Its amber eyes glowed with rest. One twilight, as the rabbit lay slowly near a stream, a venomous viper slithered from the rock and sank there. She froze, faltering, just as the snake struck. A blue and orange fur lunged the cat. He swiped the surface with razor claws, hissing fiercely as he retreated. Panting, the rabbit looked at the cat and started chattering. You saved me first. You heard about something that you but then on. They rode together. The cat lay on the while the rabbit shared a meal. He saved the old voice of the men, or you, compassion, no matter how small, always returns. जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत दरख्त के नीचे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उसका नाम इमाद अब्बास बादशाह था और वह बहुत खुश मिजाज और चुस्त बच्चा था। इमाद अब्बास बादशाह को कुदरती चीजों से बहुत मोहब्बत थी। वह दरख्तों, परिंदों और फूलों के बारे में हमेशा सवाल करता रहता था। एक दिन इमाद अब्बास बादशाह ने एक पुराना किताबचा पाया जो दरख्त के नीचे पड़ा था। वह किताबचा खोलकर पढ़ने लगा और उसमें एक कहानी थी जिसमें एक दरख्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का जिक्र कर रहा था। दरख्त चाहता था कि वह दुनिया भर के बच्चों को अपनी ठंडी छांव में खेलने का मौका दे सके। इमाद अब्बास बादशाह ने यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखा। उसने फैसला किया कि वह भी अपने गाँव के बच्चों को इस दरख्त की छांव में खेलने की दावत देगा। अगले दिन इमाद अब्बास बादशाह ने गांव के बच्चों को दरख्त के नीचे बुलाया और सब ने मिलकर वहां खेलना शुरू कर दिया। वह सब बहुत खुश थे और इमाद अब्बास बादशाह ने अपनी मोहब्बत और इल्म से सबको मुतासिर किया। उस दिन के बाद वह दरख्त गांव के बच्चों का पसंदीदा मकाम बन गया। का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जहां पर सब लोग खुश और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, एक प्राचीन और रहस्यमय झील थी। इस झील के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि झील के अंदर एक जादुई मखलूक रहती है जो सिर्फ रात के वक्त नजर आती है। एक दिन छोटे से बच्चे इमाद अब्बास और लारी फातिमा ने फैसला किया कि वो इस झील का राज मालूम करेंगे। दोनों भाई बहन रात के वक्त चुपके से झील के पास पहुंच गए।
झील की सतह पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी और झील का पानी एक अजीब सी आवाज निकालता था, जैसे कुछ अंदर से निकलने वाला हो। अचानक झील से एक रोशनी निकली और इमाद अब्बास और लारिब फातिमा ने देखा कि एक जादुई मखलूक उनके सामने आ खड़ी हुई। वो मखलूक एक दर्द की शक्ल में थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम दोनों ने झील का राज जानने की कोशिश की, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। इमाद अब्बास और लारिब फातिमा थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत पकड़ी और कहा, हम तैयार हैं। मखलूक ने पहला सवाल पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? इमाद अब्बास ने तुरंत जवाब दिया, मोहब्बत। मखलूक ने मुस्कुराकर कहा, सच में मोहब्बत ही सबसे कीमती चीज है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, सबसे ताकतवर चीज क्या है? लारिब फातिमा ने कहा, हिम्मत। मखलूक ने कहा, तुम दोनों ने सच बताया, तुम्हें झील का राज जानने का हक मिल गया। इसके बाद मखलूक ने झील का पानी चमकाया और एक दरख्त के नीचे एक खजाना नजर आया। इमाद अब्बास और लारिब फातिमा ने वो खजाना लिया और घर वापस लौट आए। अम्मा शम्मा और इमाद अब्बास बादशाह अपनी गांव की खूबसूरत सुबह का आनंद ले रहे थे। उनके साथ गुड़िया भी थी, एक छोटी शरारती बकरी का बच्चा जो अपनी छोटी छोटी घंटियों की झनकार के साथ खुशी से उछल कूद कर रही। गुड़िया कोई साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि बहुत चंचल और सबको हंसाने वाली थी। सब अच्छे से समय बिता रहे थे कि अचानक गुड़िया ने दूर कुछ चमकती चीज देखी और जंगल की तरफ भाग गई। दादी, अम्मा और इमाद ने उसे आवाज दी, घने पेड़ों के बीच गायब हो चुकी। दोनों ने तुरंत उसके पीछे जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसका पानी धूप में चमक रहा था। नदी पार करते ही उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए को एक पत्थर पर बैठे देखा। कछुआ मुस्कुराकर बोला, अगर तुम उस छोटे बच्चे को खोजना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? दादी अम्मा ने अपनी समझदारी से मुस्कुराते हुए इमाद को जवाब दिया। दोनों ने कहा, ये इंसान है, बचपन में घुटनों के बल, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के साथ। कछुए ने जवाब सुनकर खुशी से सिर हिलाया और उन्हें जंगल के अंदर जाने का रास्ता बताया। रास्ते में गिलहरियां और पक्षी उनकी मदद करते रहे और उन्हें गुड़िया के कदमों के निशान दिखा। आखिरकार उन्होंने गुड़िया को जंगली फूलों को मजे से खाते हुए पाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दादी अम्मा और इमाद खुशी से उसे गोद में उठा लेते हैं और वादा करते हैं अब उसे अकेले नहीं भटकना। वापसी का रास्ता हंसी मजाक और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। वह दिन उनके लिए हमेशा यादगार बनेगा। तो प्रेम, बुद्धिमत्ता और किसी के Beneath the sky, veiled by the curve of a colossal apple, a legion red sooty burgers swarm like ants across its sunlit surface. The fruit's chair scales defies logic. It seems a towering moonlit, its skin now waxy cliff face. Miniature excavators flare into the flesh, sending rivulets of juice cascading into the ember forts below, where cows in inflatable rafts skimmed the sticky apple lakes to collect seeds. Later teams sent pulley systems rigid between apple seeds, their helmets glowing like fireflies, and they carved out cubic shapes with laser-guided saws. Below hieroglyph post sections onto the conveyor belts made of woven grass, while engineers in the red desert source drills into the core, redirecting syrups into bamboo blades. The air hums with the buzz of productivity and the unspoken race against time before the fruits. Sugar.
Deep in the heart of the enchanted jungle, where the tall trees swayed to the whispers of the wind and the rivers sang sweet melodies, lived a kind and plump white rabbit named Raffi. He was known for his fluffy fur and warm heart. His best friend, a gentle brown bear named Bahir, was strong but kind, always looking out for the smaller animals
of the jungle. Today was a special day. It was Eid al-Fitr, a festival of joy, love, and sharing. The whole jungle was filled with excitement as birds chirped merrily and the air smelled of delicious sweets. Refi and Bahir had been preparing for days. They had made baskets full of date sweets, honey cakes, and nutty delights. Their little home, a cozy burrow near the river, was decorated with twinkling fireflies and fresh flowers. As the sun rose, Refi hopped around happily, carrying a tray of sweets. Bahir, let's go share these with our friends, he chirped. Bahir chuckled and picked up a large basket. Yes, my dear friend, Idiot is about sharing happiness. Together they set off into the jungle, spreading joy. They first visited the mischievous monkeys, who cheered as Rofi handed them sticky date sweets. Then they went to the parrots, who chirped Pirin Mubarak while pecking at honey-coated nuts. The elephants, the wisest of them all, smiled warmly as Bahir offered them honey cakes. At last they reached the open clearing where all the animals had gathered. There, under the great banyan tree, they laid out a feast. The jungle animals laughed, shared stories, and danced under the twinkling moon. Even the fireflies joined the celebration, creating a magical glow. As the night deepened, Refi looked around with happy eyes. Edit is not just about sweets, it's about being together, spreading love, and making everyone feel special, he said. Bahir patted his little friend's head and smiled. You are right, Refi. This is what true happiness, with hearts full of love and bellies full of sweets. The animals of the enchanted jungle celebrate Eid in the most beautiful way together.